sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो संडे सुबह सुबह का टाइम है, कॉफ़ी मेरी बनकर के रेडी है। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ढोकला और लंच के लिए छोले बनाने हैं। तो ढोकला बनाने के लिए रेसिपी मैंने पहले भी डिटेल में शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी दोबारा से कर देती हूँ। 1 कप मैंने बेसन लिया, यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक लिया। यहाँ पे ये छोटी वाली टीस्पून है और अच्छे से मिक्स करना है। 1 कप पानी डाल करके पतला पतला बैटर बनाना है इसका। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक करके रख देना है 5-10 मिनट के लिए साइड में। मैं छोले बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, हल्दी और नमक डाल करके। तो 10 मिनट हो गए हैं बैटर को बनाए हुए। स्टीमर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, उसमें पानी डाल करके। और अभी इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल डालने से ढोकला स्पंजी बनता है। और साथ ही में इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इधर जिस प्लेट में बनाना है उसको अच्छे से ग्रीस करना है ऑयल से, इससे ढोकला जो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और सबसे लास्ट में डाल रही हूँ बैटर के अंदर 1 पाउच इनो का पूरा सैसे एक साथ ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करना है फटाफट से, ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना है। और इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, टेक्सचर भी एकदम फ्रोथी फ्रोथी हो जाएगा ये। और तुरंत इसको प्लेट में डाल करके स्टीम होने के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने के लिए।
बनाना है नींबू पानी ढोकला के लिए। तो 1 गिलास पानी लिया मैंने यहाँ पे, इसमें 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी और 4 नींबू का रस मिला करके, थोड़ा सा नमक मिला करके अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। नींबू पानी बन करके रेडी हो गया है। अब इसको छान करके रख देना है साइड में। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said अभी लगा रही हूँ मैं ढोकला पे तड़का। तो एक तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल है, उसमें मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता, हरी मिर्ची मैं नहीं डाल रही क्योंकि बच्चों ने खाना है तो थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। तो ढोकला बन करके रेडी है। ये ठंडा भी हो गया अच्छे से और पकने के बाद इस तरह से अपने आप ही किनारी छोड़ देता है साइड में से। तो अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरी प्लेट में। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my तो इस तरह से गर्मा गर्म तड़का इसके ऊपर डाल दूँगी मैं और साथ ही में नींबू पानी भी। और इसको फ्रिज में रख देना है आधा घंटा के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world. तो छोले भी अच्छे से बॉईल हो गए। उसकी जो ग्रेवी है वो प्रिपेयर करनी है। उसके लिए मैंने 4-5 टमाटर लिए बड़े बड़े, प्याज, लहसुन और अदरक, इनका प्योरी करना है अभी। Want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. तो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया अच्छे से। इसमें डाल दूँ मैं 2 बे लीफ तोड़ करके डाले मैंने इस तरह से, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्ची और जीरा। और जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा उसके बाद डालूँगी मैं इसमें अनियन प्योरी।
इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑनियन अच्छे से भून गया है। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटो प्योरी और थोड़ा सा नमक डाल दूँ मैं यहीं पे, ताकि पेस्ट जो है अच्छे से जल्दी से ग्रेवी रेडी हो जाए। तो मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालने ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक पहले ही डाल दिया है और छोले उबालते टाइम उसमें डाला हुआ था, और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और इनको भी अच्छे से भूनना है जब तक कि मसाले में से सारा ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। But baby, I know how it goes, and right now I feel it in my bones that I gotta go on my own. I got concrete walls, got concrete walls. Hold me tight, don't let go. तो मसाला यहाँ पे एकदम रेडी है। अब इसमें जो बॉईल करके छोले रखे थे वो मिला करके इसको बॉईल लगाना है 4 से 5 मिनट के लिए, और छोले हमारी बन करके रेडी हैं।